Today we are going to study resources from your geography chapter for class 8. So we had started this chapter in our previous video, in which we had discussed about water resources. Resources are something that are useful for human beings. Then we learnt about the value. One is economic value and the other is aesthetic value of resources. How does a substance become a resource? Given time and technology, a substance becomes a resource. So then we had also learned that that resources can be classified into three. One is natural resource, human-made resource and human resources. So हमने सीखा था कि रिसोर्सेज जो है वो तीन भागों में क्लासिफाइड हो सकता है. वन इज नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमंस. सो वी हैड आल्सो लर्न दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स इज ह्यूमन रिसोर्स. क्यों सबसे इम्पोर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स क्यों होता है? बिकॉज विदाउट ह्यूमंस अदर रिसोर्सेज कैन नॉट बी प्रोसेस्ड एंड दे डोंट कम टू यूज. नाउ हम डिस्कस करेंगे the classification of natural resources. Natural resources जो है, it can be divided into four on the basis of origin, development, use and distribution. So first we will discuss about origin. So on the basis of origin, this natural resources जो है वो it can be divided into two. One is biotic and abiotic. बायोटिक रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं. फॉर एग्जाम्पल एनी रिसोर्स कमिंग फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज. बायोटिक रिसोर्सेज कैन फर्दर रिप्रोड्यूस, whereas एबायोटिक रिसोर्सेज जो है वो नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं और वो रिप्रोड्यूस नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स दे रिप्रोड्यूस, दे गिव बर्थ टू यंगर वंस, वो जन्म देते हैं. बट एबायोटिक रिसोर्सेज दे डू नॉट reproduce. Now on the basis of development के basis पे this natural resources can be divided into two, that is actual resource and potential resource. So now what are actual resources? The quantity of the resources are known to us, whereas potential resources the quantity is unknown. For example, the uranium in Ladakh. So the uranium in Ladakh, we don't know the quantity of the amount of uranium present in Ladakh. But for example, the coal in Germany, we know how much of how much of amount of coal is present in Ruhr in Germany. Now, for example, let us discuss about the windmills in नीदरलैंड्स. नाउ विंडमिल्स जो है उसको हम पवन चक्की कहते हैं. बिफोर दिस विंडमिल्स जो है थे वो एक पोटेंशियल रिसोर्स थे, बट नाउ इट इज बिकम एन एक्चुअल रिसोर्स बिकॉज बिफोर वी डिडंट नो द क्वांटिटी, but now we know the quantity, so that is why now it has become an actual resource. Now on the basis of use, natural resources can be divided into two. One is renewable and the other one is non-renewable. Now what are renewable resources? Resources that can be renewed quickly. For example, sunlight, water. But what are non-renewable resources which have limited stock and gets exhausted. Exhausted का मतलब क्या है? जो जल्दी खत्म हो सकता है. So on the basis of this, you have a term that is stock of resources. Stock of resources. What is the meaning of this term? Stock of resources. Stock of resources का मतलब है हमें जो resources available है for usage. जो the resources available for usage is known as stock of resources. Now on the basis of distribution, resources can be classified into two. On the basis of distribution, natural resources दो भागों में हम क्लासिफाई कर सकते हैं. पहला वाला है लोकलाइज मतलब जो रिसोर्सेज सिर्फ एक जगह पे इट इज लिमिटेड टू ए सर्टेन एरिया, मतलब जो रिसोर्सेज एक पर्टिकुलर जगह में पाई जाती है. एंड यूबिक्विटस मतलब जो ग्लोबली पाई. ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट without harming nature and
using resources in such a way that they are still there for the future generations. मतलब डेवलपमेंट या फिर रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना कि वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी रहे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10 kgs ऑफ यूरेनियम है, सो यूज दिस 10 kgs ऑफ यूरेनियम इन सच अ वे कि वो 50 years के बाद भी थोड़ा सा रहे, एंड लेटर ऑन आफ्टर 2000 years ऑल्सो यू हैव सम पार्ट ऑफ इट रिमेनिंग. मतलब अगर आपके पास 10 kgs ऑफ यूरेनियम है तो उसको इस तरीके से यूज करना कि 50 साल के बाद भी थोड़ा सा रहे, एंड आफ्टर 2000 years ऑल्सो यू हैव सम ऑफ इट लेफ्ट. Now, what are the basic principles of sustainable development? Sustainable development के basic principles क्या है? To respect and care for all forms of life. Second, improve the quality of human life. मतलब human life को improve करना with minimum destruction to the nature. मतलब without harming the nature. Nature को बिना harm किए हम human life को improve कर सकते हैं. Conserve Earth's diversity. All these points we have been learning in our environment studies in previous classes also, and we have to work on them, like minimize depletion of natural resources, use them in a limited manner कि वो completely deplete ना हो, वो थोड़ा सा future generations के लिए भी रहे. Change personal attitude and practices towards the environment. मतलब हम environment को डैमेज ना करें. लाइक फॉर एग्जाम्पल, सुबह हम जब ब्रश करते हैं, हम नल ऑन रख के ब्रश करते जाते हैं, द वाटर कीप्स गेटिंग वेस्टेड. सो वी हैव एन इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड टुवर्ड्स द नेचर. सो हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? वी पुट ऑफ द टैप, ब्रश आवर टीथ, स्क्रब आवर टीथ, एंड देन start the tap to gargle our mouth. So in that way we are practicing a healthy way. In a healthy way we are practicing our daily needs, and we are conserving environment also. And last, enable communities to care for their environment. What is the meaning of enable communities? We should teach and educate. हमें बाकी जो uneducated लोग हैं, जो लोगों को इन चीजों के बारे में पता नहीं है, उनको enable करें, उनको inform करें कि हम अपने environment को कैसे conserve कर सकते हैं. So now I have given you some homework, and this is for class 8. So the answers you will get it in the previous video also, because half of this chapter we have completed in another video and half I have completed in today's video. So the first question is, what is a resource? Mention the types of resources. Just now I taught you there are 3 types of resources. What is HRD? HRD is something related to human resources that you will have to find out. It is in the first video. And then question number 4, what is the difference between? So you have to write the difference between biotic and abiotic resources, localized and ubiquitous. Third, renewable and non-renewable resources. And last, what is sustainable development? Sustainable development क्या होता है? Thank you.